Good evening, students. Today we are going to discuss a very important topic pertaining to JEE Advanced from stoichiometry, which is called double titration. बेटा आप लोगों ने टाइट्रेशन सीख रखा है, जेई मेंस के वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था. और एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, बाय सेइंग टाइट्रेशन वी मीन टू से determination of strength of a substance in a solution using another standard solution. There were several kind of titration, acid base titration, redox titration, like that. Those were simple titration. वहां पर सिर्फ एक तरह के सॉल्ट या एसिड या बेस होते थे और उसके स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन हम लोग दूसरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से करते थे. एज द नेम गोज, double titration it is quite obvious that this titration is being carried out in two successive steps. Now the question arises, ये दो successive step की requirement क्या है? बेटा बेसिकली इस टाइट्रेशन को हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा तरीके का बेस होता है. इन द नेम ऑफ इनऑर्गेनिक बेस यूजुअली वी हैव थ्री डिफरेंट स्पीसीज. फर्स्ट इज हाइड्रोक्साइड of any alkali or alkaline earth metal. Usually it remains that of alkali metal, carbonate और bicarbonate. बेटा ये तीनों ही एक्वस सॉल्यूशन में बेस तो हैं, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रेंथ बराबर नहीं है. बल्कि जब अब एडवांस लेवल पे प्रिपेयर हो रहे हो तो you must be aware about their relative strength. That will also help you out to determine whether a reaction will take place or not in organic chemistry also. So let us have a look into their mathematical parameter of equilibrium constant. If we have ionization, self-ionization of water, for the sake of convenience, I am writing it in a simple way. We do know in reality there should be two water molecules, there should be a protonated water molecule, hydronium ion, and then hydroxide ion. But for the sake of convenience, right now I am using this, I am taking this liberty. For this reaction, the K ionization value happens to be 1.8 into 10 to the power minus 16 m at 25 degrees centigrade. Whereas, if we talk about the dissociation constant of carbonic acid, which is a diprotic acid, which will ionize in two successive steps, suppose we are taking H2CO3 in the first dissociation, then it will ionize into H plus and HCO3 minus. Its K value is approximately 5.6 into 10 to the power minus 7. Further, when bicarbonate ion will ionize to give H plus ion and carbonate ion, its dissociation constant K2 happens to be approximately 6. Its K2 value is 6.7 into 10 to the power minus 11. While discussing all this, I also want to introduce the concept of acid-base reaction, because such kind of questions are frequently asked in organic chemistry, whether this compound will react with carbonic acid or not, sodium carbonate, sodium bicarbonate, whether it will liberate carbon dioxide or not, like that. Now consider
the magnitude of equilibrium constant of these species. If the forward reaction explains the acidic strength of these three compounds, if we look into the equilibrium constant for the reverse reaction, it will give us the fair idea about their basic strength. Now see, out of these three, hydroxide is the most willing species to accept H plus ion, because if the equilibrium constant for the forward reaction is this one, then of course for the reverse reaction, the equilibrium constant will be reciprocal of that. So this will have the maximum value of equilibrium constant. And as you know, higher the magnitude of equilibrium constant, greater the extent to which a reaction proceeds to. If we consider about this one, this is this and this. By observation, we can conclude that the order of basic strength for these three species will go as hydroxide, most basic, then it is carbonate, and then it is bicarbonate. Out of these three, the most basic one is hydroxide, next to it is carbonate, and the least one is bicarbonate. You might be thinking why I am deviating from those points, because this will help you to determine several situations of organic chemistry as well. So let us finish it over here itself. So these are the relative order of basic strength of hydroxide, carbonate, and bicarbonate. Now, as all of you are aware about the acid-base concept, so you are very much aware, whenever H plus will come from acid, उस H प्लस को लेने का सबसे पहला राइट इस हाइड्रोक्साइड को होगा. जब यह हाइड्रोक्साइड फिनिश हो जाएगा, नहीं रहेगा, फिर अगर और H प्लस की सप्लाई रही तो कार्बोनेट के टर्न होंगे, और जब कार्बोनेट भी कन्वर्ट होकर बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, उसके बाद कहीं बाइकार्बोनेट की बारी आएगी कि वो एसिड से आए हुए H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे. सो the relative order of basic strength also determines to whenever a reaction will take place, who will be the recipient of H plus ion. So this is a basic idea you should keep in your mind. Now, to clarify this idea in a better way, let us have a situation. Suppose there is a test tube in which there are 10 H plus, 10 hydroxide, 10 carbonate, and 10 bicarbonate. And you are adding 8 H plus ion from outside. All these 8 H plus ion will be accepted by hydroxide itself, being the strongest base. So hydroxide will accept H plus ion and will get neutralized like this. Hydroxide, it undergoes neutralization in a single step. So hydroxide will accept H plus ion from acid and will convert into water, which is called neutralization process. So hydroxide get neutralized in a single step. This is neutralization. Whereas when all the hydroxide will be over, after that, if we keep on adding H plus ion, then it will be turned for carbonate to accept H plus ion. But don't do a mistake. Don't think that the carbonate will accept 2 H plus ion to get neutralized. See, carbonate undergoes neutralization in two successive steps. In first step, carbonate accepts 1 H plus ion to convert into bicarbonate. This step is basically called partial neutralization of carbonate. Because carbonate requires basically 2 H plus ion to get completely neutralized. We have provided just 1 H plus. This is partial neutralization. Because the species formed after this, which is bicarbonate, that is still basic. It's not complete neutralization. Now, if more H plus will be added, then this bicarbonate will also get an opportunity to accept H plus ion. After accepting this,
This will convert into carbon dioxide plus water. Complete neutralization will take place. This is complete neutralization. There is no scope of further absorption of H plus. This is complete neutralization. So hydroxide gets neutralized in a single step, whereas that of carbonate neutralizes in two successive steps. In first step, it converts into bicarbonate. In second step, the bicarbonate further accept H plus ion to convert into carbon dioxide and water. This is a complete neutralization. Now, if there is a, let us have it in theory first, then we will go for mathematical aspect. सपोज करो बेटा एक टेस्ट ट्यूब में 10 H प्लस 10 हाइड्रोक्साइड 10 कार्बोनेट और 10 बाइकार्बोनेट एंड वी हैव एडेड 18 H प्लस आयन. तो उस 18 में से पहले 10 H प्लस इस ये हाइड्रोक्साइड ले लेगा, वाटर में बदल जाएगा. अब बच गए 8 H प्लस. उन 8 H प्लस को एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बोनेट पहले आएगा. 8 कार्बोनेट 8 H प्लस को लेंगे और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे. दैट मीन्स फाइनल कंपोजिशन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा नो हाइड्रोक्साइड, 2 कार्बोनेट एंड 18 बाइकार्बोनेट. 18 कहां से आया? 10 वो बाइकार्बोनेट जो शुरू से थे उसकी तो अभी टर्न ही नहीं आई है H प्लस लेने की, और 8 बाइकार्बोनेट जो कार्बोनेट के पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बना है. सिमिलरली if we have 10 hydroxide, 10 carbonate and 10 bicarbonate in a test tube and we are adding 24 H plus, then what will happen? First 10 H plus will go to neutralize 10 hydroxide, second 10 to neutralize carbonate till bicarbonate, and after doing that we are still left with 4 H plus ion. But now the solution contains 20 bicarbonate. First 10 carbonate which was from the beginning, another 10 bicarbonate which is formed as a result of first stage of neutralization of carbonate. So we have 20 bicarbonate, but we have provided just 4 more H plus are left. So these 4 H plus ion will be accepted by 4 bicarbonate to convert into carbon dioxide and water, and 16 bicarbonate will remain as it is. And now the question arises, if we need to neutralize all these things completely, then what we have to do? Then we have to arrange as many H plus which can neutralize all these three. For 10 hydroxide, we require 10 H plus. For 10 carbonate, we require basically 20 H plus to go up to this stage. And for 10 bicarbonate, we require 10 more. So altogether, 40 H plus is needed to make it completely neutralized. Now, if a mixture comprised of both of these things, or maybe comprised of all the three things, in that case, we make a solution, take it in a beaker, and we titrate it against a strong acid. But उस केस में जब न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो we use 2 different indicators to exactly know where the reaction could reach by now. There are 2 indicators. If we talk about hydroxide, this will be the first one which will keep on gaining H plus for the initially, and then next turn was the carbonate. So if we use an indicator phenolphthalein, this indicator will point out the end point the moment entire hydroxide and all the carbonate, entire hydroxide get completely neutralized and all the carbonate got converted into bicarbonate. It will not wait until the entire bicarbonate will get neutralized. Rather, उस solution में भी पड़ा हुआ है, bicarbonate है. Still, it will point out the end point because, as you know, the color change value for this indicator lies in alkaline medium. So this phenolphthalein will announce the end point, will point out the end point the moment both these steps are over. But if we carry out a titration of the mixture of this salt against a strong acid and we take methyl orange as an indicator, then methyl orange is another kind of indicator which will change its color only when
all these basic substances will be completely neutralized, no base will be left. The color change value for methyl orange indicator lies in acidic medium. So when all these steps will be completely over, only then it will point out the end point. So first of all, you should keep in your mind क्या क्या stages हैं. Phenolphthalein indicator कलर चेंज करके टाइट्रेशन का एंड पॉइंट तभी बता देता है जब सारे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में बदल चुके हैं. एंड नीडलेस टू से किसकी तो बारी ही तब आएगी जब हाइड्रोक्साइड निपट चुका होगा. सो उस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट नहीं होगा. बट अगर मिथाइल ऑरेंज को यूज कर दिया तो ये मिथाइल ऑरेंज अपना कलर उस वक्त चेंज करेगा जब सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, कोई भी बेस उसके अंदर नहीं बचा होगा. सो दिस इज द बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डबल टाइट्रेशन. नाउ लेट अस हैव इट मैथमेटिकली. लेट अस हैव एन एग्जांपल फर्स्ट. चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, इजी समझ में आ जाए, इसलिए मैं मोल के टर्म में ले रहा हूं. सपोज करो इस सॉल्यूशन के अंदर ए मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं, इसके अंदर बी मोल सोडियम कार्बोनेट के हैं और सी मोल दैट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. ये तीनों बेसिक मटेरियल इसके अंदर है. एंड वी स्टार्टेड अ टाइट्रेशन. इसको ले लिया एक बीकर में, ब्यूरेट के अंदर डाल दिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड, स्टार्टेड टाइट्रेशन. और इस वक्त जो पहला इंडिकेटर हम लोगों ने यूज किया दैट वाज फिनोप्थलीन सपोज. एंड फॉर दिस बी रिक्वायर्ड N1 strength solution of HCl. We have taken N1 strength solution of acid HCl and the volume of acid required is say V1 ml. This one was needed to reach the phenolphthalein end point. जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, it must be clear to all of you कि अगर अब phenolphthalein end point पे हम लोग रीच कर गए तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन के अंदर का सारा हाइड्रोक्साइड खत्म हो चुका है और कार्बोनेट भी बाइकार्बोनेट में बदल चुका है. नाउ सपोज बी एड अनदर इंडिकेटर से मिथाइल ऑरेंज. इफ वी आर टेकिंग मिथाइल ऑरेंज नाउ, इन द ओपिनियन ऑफ मिथाइल ऑरेंज द सॉल्यूशन इज स्टिल बेसिक बिकॉज बाइकार्बोनेट तो वहां पड़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट भी एक वीक बेस है. और मिथाइल ऑरेंज तो अपना कलर तब चेंज करेगा जब मीडियम एसिडिक हो चुका होगा. दैट मींस मिथाइल ऑरेंज विल से अस कि ऐड मोर अमाउंट ऑफ एसिड, स्टिल बेसेस आर देयर व्हिच नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज्ड. नाउ सपोज once again we have utilized the standard solution of HCl. Suppose its strength was that of N2. That was the strength of, don't misinterpret it like nitrogen. So let us change it. This one. It may create a confusion while revising. Okay, let's have once again N1. N1 strength HCl solution, standard solution. And this time, say V2 ml of this HCl was needed to reach complete end point. चलो मैथमेटिकल एस्पेक्ट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे. पहले मुझे ये बताओ कि इस स्टेज पे जो एंड पॉइंट आया, अब उस सॉल्यूशन में क्या क्या रह गया है. राइट, नाउ दिस सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन एनी बेस, ऑल आर गॉन. हाइड्रोक्साइड लॉस्ट, कन्वर्टेड इनटू वाटर. कार्बोनेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बाइकार्बोनेट दैट आल्सो गॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बिकॉज मिथाइल ऑरेंज तो अपना कलर तभी चेंज करेगा जब ये सारे खत्म हो चुके हैं. सो अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टू रीच स्टेज 1 टाइट्रेशन, स्टेज 1 एंड पॉइंट, दैट मीन्स phenolphthalein एंड पॉइंट,
equivalent of HCl used या needed, that must be equal to equivalent of NaOH, और NaOH का बेटा इसमें N फैक्टर क्या होगा? 1 molecule will accept 1H plus ion, and equivalent of सोडियम कार्बोनेट, बट इस सोडियम कार्बोनेट का N फैक्टर क्या होगा? डोंट मिस इंटरप्रेट इट, यूजुअली इट लुक्स यू कि कार्बोनेट 2H प्लस लेता है, बट फेनोक्टिलीन के प्रेजेंस में तो केवल एक ही H प्लस लेगा और एंड पॉइंट आ जाएगा. सो इस वक्त जो इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, दैट इज पर्टेनिंग टू N फैक्टर 1. दिस इज व्हाट दैट गॉट न्यूट्रलाइज्ड. नाउ the equivalent of HCl is N1 into V1 by 1000, नॉल्टी into volume by 1000 से हम लोग को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मिल गया. एंड फॉर NaOH it is A mole into N factor plus B into 1. This is your equation number 1, which tells us how did we reach to first stage of neutralization. Now, when we added, although it requires to change the page, but to make you understand better, I will use the same page. Please manage. To reach stage 1 to stage 2 titration. That means in second stage of titration, better to say, you may get confused, so let me correct the word. In second stage of titration, in second stage of titration, whatever amount of acid was utilized, that acid was basically used for the neutralization of sodium bicarbonate, which was present from the very beginning, as well as for the neutralization of sodium bicarbonate formed as a result of partial neutralization of sodium carbonate in stage 1. So now the equivalent of HCl in second stage, of course, this is equal to equivalent of sodium bicarbonate present from the beginning, present from beginning, plus equivalent of sodium bicarbonate formed during partial utilization of carbonate, during partial neutralization of carbonate. So if we go mathematically, सेकेंड स्टेज के लिए अगर N1 स्ट्रेंथ का HCl यूटिलाइज हुआ था जिसका वॉल्यूम V2 ml लगा था, तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl वाज दिस वन, एंड दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज C/1 प्लस. तुम ही बताओ, अगर एक कार्बोनेट न्यूट्रलाइज होता है, दिस इज ए कार्बोनेट सपोज, ये जब पहला H प्लस गेन करेगा तो कन्वर्ट कहां होता है? बाइकार्बोनेट. देन ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट स्टेप में अगर इसके बी मोल थे तो आफ्टर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन इसके भी बी मोल ही बने हैं. सो इस स्टेज में जब ये HCl यूटिलाइज हुआ है तो वो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बिगिनिंग से था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट फर्स्ट स्टेज के न्यूट्रलाइजेशन में बना है उसके लिए लगा. सो दिस इज स्टेज 2 second equation. Now, if the data are given, solving this one, you can find out the amount. But at the same time, let us have one more thing.
Taking the same question, a mole of sodium hydroxide, B mole of sodium carbonate, and C mole of sodium bicarbonate. And now suppose in the very beginning, our objective was not to know precisely the different amount. Rather, we were trying to find out exactly how much equivalent of total base is there. So B utilized methyl orange as an indicator since the beginning. And once again, let us suppose the acid used was that of N1 strength, HCl, and this time its V3 ml was needed to reach end point. Now this is not two-stage neutralization. See, whatever base is there, the entire base will be completely neutralized using HCl, because now indicator is methyl orange, which will change its color in only acidic medium. So all the three bases will be neutralized. For this one, if we call the equivalent relation, then equivalent of HCl needed, that must be equal to equivalent of NaOH plus equivalent of sodium carbonate present in the sample plus equivalent of sodium bicarbonate present in the sample. Now, have a question. अब जब इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो, कोई बैरियर नहीं है, स्टेज वाइज न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, तो नाउ एवरी कार्बोनेट विल एक्सेप्ट 2H plus ion to get completely converted into carbon dioxide and water. So if we talk about the N factor, for this NaOH it is 1, for this is 2, and for this is 1. So now it is N1 into V3 by 1000. This is the equivalent, not into volume by 1000. This is equal to A into 1, number of mole into N factor, B into 2. B into 2 is number of mole into N factor, and C into 1. So these three are getting neutralized completely in this case. This is your equation number 3. Now, carefully see all these equations. What relation did you get? See, what relation did you get? You got a relation. V1 plus V2 equal to V3. Very perfect. Why? Suppose we are carrying out titration in successive stage. आधी दूरी तक किया, कुछ दूरी तक किया, फिर आगे किया, और एक बार कंप्लीट किया, तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो न्यूट्रलाइज है तो सेम ही है. इसलिए चाहे स्टेज वाइज करें या एक बार में करें, टोटल एसिड विल सेम. So this relation will hold good. Now, this one was the wholesome idea of this double titration. Now let us have a very good example which will really enlighten your mind and none of the question can escape from you. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, उसको ठीक से देखो, समझो, उसके बाद तुम्हें कभी दिक्कत नहीं करेगा. और ये चीज भी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ये कॉम्प्रिहेंशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडवांस लेवल पे, और अगर ये मेंस के लेवल पे आएगा तो सिंगल स्टेज और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे जहां डेटा में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा. आने को तो दोनों ही जगह आ सकते हैं, लेकिन मोर प्रोमिनेंट देयर. नाउ see, suppose from excavation we got a sample of some basic material, say 50 gram basic material, basic substance, along with impurity. We got it from the mines, so it is also containing impurity.
Now, we don't know exactly what kind of bases are there and how much amount of bases there. We don't know. Suppose some possibilities are given. Probable composition. Probable composition is given. First, either it will have just NaOH or this sample will have just sodium carbonate, or this sample may have only sodium bicarbonate, or let us make it a bit more complicated, a mixture of sodium hydroxide and sodium carbonate. फाइन, चलो एक और ऐड करते हैं, a mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate. माइंड इट, मैंने ये नहीं कहा कि सब्सटेंस में केवल ये है प्लस इंप्योरिटी. नाउ दिस सब्सटेंस वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर, मेड अ सॉल्यूशन से 100 ml. After dissolving in water, we made it 100 ml. Now the titration is being carried out first using phenolphthalein as indicator. This time, say 8 ml N/50 N/50 H2SO4 required to reach the end point. When this end point reached, then just to test, we added some methyl orange to it. Some methyl orange was added. Now this methyl, after adding methyl orange, there is no color change. That means it is pointing out some bases are still there. So we need to add, say, 10 ml N/50 H2SO4 further to reach the end point. Now the question is, first of all, you decide what is the exact composition of the sample, then its amount, nature, as well as percentage composition, mass percentage. You just try to interpret the question first. I'm giving you 2 minutes. Then we will try to solve this one. Let us proceed further. बेटा ये बताओ, एक एक करके एनालाइज करते हैं. अगर इस सैंपल के अंदर सिर्फ NaOH हो एज बेसिक मटेरियल, तो फर्स्ट स्टेज पे क्या न्यूट्रलाइज होगा? NaOH. किस स्टेज तक? कंप्लीटली. फिर उस सोल्यूशन में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं. फिर ये सेकेंड स्टेज में जो एसिड कंज्यूम हुआ, किस पर्पस से कंज्यूम हुआ? सो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि ये कंपोजिशन नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ लेट us suppose this sample is comprised of sodium carbonate alone. अगर सोडियम कार्बोनेट है, फिनोप्थिलीन के प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज तो होगा. किस स्टेज तक? अप टिल बाइकार्बोनेट. और जब फर्स्ट स्टेज रीच हो जाएगा, फिर उसमें एसिड डालेंगे तो अब क्या न्यूट्रलाइज होगा? बना हुआ बाइकार्बोनेट फर्स्ट स्टेज का टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. हैव यू नोटिस कितने कितने इक्विवेलेंट एसिड दोनों स्टेज में लगते हैं कार्बोनेट के लिए? परफेक्टली इक्वल.
क्या जितने इक्विवेलेंट यहां हैं, अगर मैं बात करूं यहां 8 into 50, दैट मीन्स 0.16 मिली इक्विवेलेंट एसिड यहां कंज्यूम हुआ है, और यहां पे 10 into 1/50 अपॉन 10 into 1/5, दैट मीन्स 0.2 मिली इक्विवेलेंट एसिड यहां खर्च हुआ है। क्या ये दोनों एसिड की जो अमाउंट है वो इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट स्टेज में कम एसिड कंज्यूम हुआ, सेकेंड स्टेज में ज्यादा एसिड कंज्यूम हुआ। इट मींस ये सोडियम कार्बोनेट तो नहीं हो सकता, अदरवाइज दोनों स्टेज पे बराबर इक्विवेलेंट एसिड के लगने थे। दिस इज ऑल्सो गॉन। नाउ लेट अस कंसिडर सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इस सैंपल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो उस केस में जब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर लेंगे तो पहले ही बोलेगा टाइट्रेशन इज ओवर। सो फर्स्ट स्टेप में तो कोई भी एसिड कंज्यूम नहीं होगा। हाँ, सेकेंड स्टेप में रिक्वायर्ड होगा, लेकिन यहां पे फर्स्ट स्टेप में यूटिलाइज हुआ है, सो देर इज नो स्कोप। ये भी नहीं हो सकता जी। नाउ कंसिडर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, इट गॉट इरेज्ड। नाउ अगर इनका मिक्सर होगा, तो जब फिनोप्थिलीन के प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 100% न्यूट्रलाइज, सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक, और जब सेकेंड स्टेज में न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से जो बाइकार्बोनेट बना है वो बचा हुआ है, वो न्यूट्रलाइज होगा सेकेंड स्टेज। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट स्टेप में जो एसिड लगा है ये दोनों के लिए, इसके लिए कंप्लीट, इसका आधा न्यूट्रलाइजेशन पार्शियल, और सेकेंड स्टेप में केवल इसका हाफ। तो एनीवे जो सेकेंड स्टेप में एसिड की रिक्वायरमेंट है वो पहले स्टेज से कम होनी चाहिए, जो ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। सो नो स्कोप, ये भी नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू दिस वन, बाय हॉब्सन चॉइस ऑटोमेटिकली, अब एक ही रह गया, वो तो होगा ही, बट लेट अस कैलकुलेट इट मैथमेटिकली। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन होगा टिल बाइकार्बोनेट, और सेकेंड स्टेप में यही बना हुआ बाइकार्बोनेट और ऑलरेडी प्रेजेंट बाइकार्बोनेट दोनों ही न्यूट्रलाइज होंगे, इसलिए ज्यादा अमाउंट लगा है। सो एज फार एज इट्स करेक्ट ऑप्शन इज कंसर्न, obviously the correct option is this one, undoubtedly. This one is one of, out of the given possibility, I'm not talking about total possibilities, out of the given possibilities, this is the only one which can be there. Now let us have mathematical aspect. जब इतनी अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं तो now it will hardly take a fraction of minutes to solve it. चलो बेटा, मान लेते हैं कि इस सैंपल के अंदर, लेट अस एज्यूम कि इस सैंपल के अंदर ए मोल सोडियम कार्बोनेट का था और साथ ही साथ बी मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का था। ये एज्यूम किया मैंने, कहां पे, इसमें नहीं एज्यूम किया है, 100 ml में, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, जितना यहां है वही यहां था, फिर परसेंटेज निकाल देंगे। तो अभी जो एक फिनोप्थिलीन इंडिकेटर वाली बात करें, तो व्हेन phenolphthalein indicator was used, equivalent of sulfuric acid, that is 8 into 1/50 upon 1000. This is the equivalent of sulfuric acid. This is the equivalent of sulfuric acid. This should be equal to A into 1, that is equivalent of sodium carbonate, considering its n factor 1. बस उतना ही तक न्यूट्रलाइज हुआ होगा और एंड फैक्टर आ चुका हो, एंड पॉइंट आ चुका होगा फिनोप्थिलीन का। When methyl orange was taken as
indicator. Now the equivalent of acid utilized is 10 into 1 upon 50 by 1000, and this should be equal to A into 1 plus B into 1. Equivalent of sodium bicarbonate, which was present from the very beginning, plus equivalent of sodium carbonate, sodium bicarbonate formed due to the partial utilization of sodium carbonate in the stage 1. Now you have two different equations. सॉल्व कर दो. इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी का अमाउंट आएगा, और जैसे ही ए और बी का अमाउंट आएगा, मोल आएगा, उस मोल को आप मास में कन्वर्ट कर लो. आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन randomly, so let me correct the data so that it may not go wrong in any way. So let me increase its value. I don't know whether this data will be sufficient or not, so let me have like this. Suppose you assume 200 gram basic material. जो कैलकुलेशन आपने किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उससे केवल परसेंटेज में फर्क आ जाएगा. ए और बी तो उतने ही आएंगे. अब आउट ऑफ 200 ग्राम है, अकॉर्डिंगली परसेंटेज चेंज होगा. तो इनको सॉल्व करके इनके मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करके उनके मास निकाल लो, एंड दैट मास इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम, देयर बाई परसेंटेज कंपोजिशन. सो आज का लेसन सिर्फ इतना ही. अब इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करो, कोई डिफिकल्टी हो जरूर डिस्कस करो. बाय.